Well, hello and welcome to Immigration and Jobs Talk Show. I'm your host, Rajni Bharara. Well, like I would like to tell you that, I've already introduced myself that I am Rajni Bharara, your host for today's episode. And in our last session, I would like to tell you that, which took, I think, last Thursday, we delve into the intriguing topic about can astrology impact your visa approval. We had the privilege of hosting the renowned Vastu and astrology expert, Dr. Deepika Gupta, who shared some fascinating insights. And today we again have a beautiful guest, Dr. Deepika, here as we continue to deep dive into the intersection of astrology and visa approvals. So, joining us again is the esteemed Vastu and astrology expert, the beacon of knowledge herself, Dr. Deepika. Dr. Thank Deepika, you, Rajni. Thank you so much. thank you for always coming to the show and gracing our platform. We only had first episode with you and this is our second episode, but we are so much excited because not just us but our audiences are also very much excited to have you on the show. Yeah, thank you. Thank you so much. And I'm also looking forward to, talk to each and everyone here. Amazing. So, without any further ado, let me just quickly read out this disclaimer. By watching our videos, you agree and understand that the information provided by our experts and attorneys, including comments and replies from users, is not legal advice. Use of information is at your own risk. Now, let me also tell you, our lovely audiences, that please note that this session is being streamed live on YouTube, LinkedIn, and Facebook. And the handle is Immigration Talk Show and also on Twitter as well. So don't forget to subscribe to us. And if you have any questions to our expert, Dr. Deepika, here, wherever you're watching it from, please comment with your questions. We'll be glad to answer them. And without any further ado, I'm saying it again and again, but now it's the last time. I would like to ask you my very first question. So, Dr. Deepika, for the ones who don't know the exact meaning of these two words, for those people, can you please explain what does astrology and Vastu exactly mean, and how were these words? I mean, how did these two words come up? Okay, so Yeah. see, astrology is actually the balance sheet of all your past birth karmas. Like in the past births, whatever you have done. So, astrology is balance sheet of that. That okay, you did good with the father, the sun is going to give you good results. You did good with the brothers, the Mars is going to give you good results. But in case you did bad with the mother, the moon is going to give you the bad results. So, whatever you have done in all the passports, astrology is that. And then again, the second thing is that there are many type of karma. So some, let's say if somebody walking on the road and there is an ant, so there can be two three thoughts. One, that the person saw the ant and he wants to put his feet on the ant. The second is by mistake he did that, right? So there is difference between two. Though, like, if by mistake or intentionally, if you put the feet on the ant, obviously the ant is going to die, but the intentions matter, right? In the first, you intentionally want to hurt, and the second, it was totally by mistake. So uh, some faults, the god says, okay, it was not done intentionally, so let me remove that. But some are done intentionally, right? So Hmm. those give you maximum bad results where the intentions are wrong, where the intentions were bad. So Hmm. similarly, there are 9 planets and 12 houses in the Vedic astrology. Right. According to the astrology, we can know, okay, what percentage has been there. Like, let's say somebody has just a cold and cough, the other Mhm. person can have fever with cold and Mhm. cough, the third person can have high fever, the fourth Right. can be into the ICU, the fifth can be on the ventilator, right? So, Mhm. but what we will say, the person is sick, right? So, Mhm. but the amount, the consistency of that sickness matters. So Right. similarly in astrology, even if twins are born, they both can have different fate, Yeah. because what the basic thing is, what they're bringing from their past. That's why it is always said, do good and let good come to you. What you sow, so shall you reap. So that Right. reaping, what you are going to reap is your astrology chart. Okay, what you will have now.
let's say now where the remedies work then. So Mm-hmm. remedies work if somebody has only cold and cough, it's very easy to cure that person. Right. If another person has fever stage 2, it's Mm-hmm. again easy. The third, high fever, again it is curable. The fourth, ICU, right? So Mm-hmm. there you need more care. The fifth Mm-hmm. is ventilator. So there even the medical science also says, okay, we have done this thing. Or if somebody is in the coma, then this the doctors also say, see, we have done, you also now pray. Or now we have to wait when the body will reciprocate, right? Right. So Right. similarly in the astrology also, if I talk about my previous example where the intention was good, right? Mm-hmm. And then also the person put his feet on the ant died, so he Yeah. has to face the karma. But the result will be very very minute. But where it was intentionally, at that point person will have the severe results, severe Okay. bad results, right? But then So sometimes, I'm so sorry to interrupt you in between, but this question just came up. So I'm just asking you. I just want to know that sometimes, because the mosquitoes bite us, so we hmm, also tend to, kill the mosquitoes. yeah. So will that be counted as like bad karma or bad intent, or how how is it going to like? See, this is very very again deep thoughts, and many school of thoughts are attached to it. Okay. Like as per me, if it's hurting you, then Yeah. try to just remove from the body. But Hmm. until and unless like it's, then okay, you can obviously hit them, but try to just remove, right? But Mhm. sometimes it's unbearable. At Yeah. that point, yeah, you can do. But yeah, at the first place, just try to wave them off. Okay. Okay. Understood. So the astrology you have explained. Now, if we talk about Vastu, Hmm. I mean, we have already spoken a lot about it in the previous episode, I think. So I would Yeah. like to tell you everyone that we are continuing our discussion from the previous episode and addressing the questions which were left unanswered. But before we jump into that, remember, if you missed the first episode or have any questions, feel free to catch up on our channel. And now, Dr. Deepika, let's address the questions which were pending from the last one. Okay, Okay. so Yeah. the next question that we have is about the misconceptions, basically. So, if you can please tell us what are some common misconceptions people have about astrology's influence on visa approvals? Okay, Because, first of all, people yeah, take astrology as the magic factor. That the astrologers are have some wands in their hand and they are going to make some magic in the life. yeah, Please come out of that misconception. It's a big, big misconception. First thing. uh-huh, The second thing, people today have become so artificial that they want to control God and God's action too. Oh, mhm, I'm doing this for the planet. They should definitely give me back. See, you cannot control the universe. So mhm, sometimes people say when like they do consultancy with me, oh, I am doing this, I should get this, mhm, right? So right, see, even if somebody is suffering from the fever at home, you have given them medicine. Can you exactly predict at what time this medicine is going to work on the body? And if the mhm, medicine does not work on the body as per your demand or as per your wish, then can you do anything about it? right, Similarly, first of all, make sure that if you're doing anything, be humble, first of all. mhm, Right? of While course. doing any remedies, don't get into the attitude, oh, I have done this, I should get this result. And the second thing is, because see, today this astrology industry has Mhm, so much power and the business is so flourishing here that people speak anything just to run the mhm, channel, right? yeah, So yeah, earlier days only the Vedic remedies were considered. Now people have started saying, oh, do this. So, yeah, like sometimes when I hear the remedies, I feel so like sometimes I even want to laugh, like, seriously, is this a remedy? No, it's not a remedy, right? So people do anything, so just come out of that misconception. The mhm, third is that people say, okay, you cannot create, obviously yes, hard work is the key for the right, success. of course. Totally totally believe in that. But then another thing is that if something is not written, this is my experience again, that if something is not written in the chart, right, Mhm, then whatever hard work you keep on putting it, you only wasting your time and energy. Why don't you do something which is written in your chart? Now let's say if
if my destiny meant to be that I have to be an astrologer on the healing factor, now if I keep on stumbling that no, I have to be a doctor, then it won't make it out. I'm going to just keep on wasting my energy, time, money, everything. So why don't you show your chart to an eminent astrologer, see what Mm, are the options for you, and then you put your right amount of energy, whether it's money, whether it's power, whether it's time, whether it's your hard work, into that to get the maximum success. Do mm. hard work. Without hard work, nothing can be achieved. If Yeah, I put of thousands course. of dishes in front of you, you Mhm. have to put it in your mouth with your own hands only, right? Yeah. Let's say Mhm. destiny has said that today Rajni ji will get the favorite food, right? Now the Yeah. food is in front of you, then your hard work will be that you have to take in Take your the mouth. bite and eat. Yeah, of Yes. course. And you have to chew. Your teeth have to do the hard work. They have to chew, and then you have to swallow. Then the stomach will start its work. Even it has to digest. So a process has to be followed. But, Mm. the people think this, yes, hard work has to be put, but in the right direction. Yeah, of course. Today, But nobody has time, yeah. energy, money to waste. So Hmm. I usually say that check the horoscope, just see what is meant best for you. And Mm. then go in that direction, do hard work in that Yeah. direction. Hmm. Okay. So, sometimes people don't want to settle for less. This also Hmm. happens, right? Yeah. And they Yeah. come to astrologers and they say, I'm trying so hard, but then the astrologer tell them, see, it is not in your chart. Hmm. If we when we are looking at your chart, so these things what you're dreaming of or what you're trying to achieve is not in your chart. But then, Hmm. sometimes, but because dreams have no limit, right? People can dream anything Yeah. and they Yeah. never want to settle for less. Yeah. But if a person is hardworking, and even if it is not in that person's chart, let's suppose a person wants to go to US, go to the Hmm. US, Hmm. and but the chart is having some issues and some problems there, okay, Hmm. which is creating hindrance for that particular person. Hmm. But is it then, but after trying hard, and if that person is really trying hard to get the visa approved, is Hmm. it possible that after a lot of hard work it is possible, I mean, it is possible for the person to achieve their dream or to get their visa approved? Okay, very, very good question. Very good question. First of all, why you have to settle for the less? Don't settle for the less, right? Okay. The second thing is that hard work can bring anything. If it is not written in the chart and you keep on doing, though the success will come late, but it will definitely come to you. The Mm. third thing is, if your destiny is not meant to be, let's say, I'm just taking your example, if the destiny is not meant to go to a foreign country or settle in the US, then why you have to move in that direction? Why don't you then choose a country which is meant for you? Because through the horoscope it can be, like sometimes the horoscope says it's best to go where more of the spirituality is followed. Now let's say somebody is in the Sri Lanka, for them India is a foreign country, like Yeah. settling in the India is a foreign country. So where spirituality is maximum, or okay, Mm. go to a place where business is meant to be more, or go to a place where IT sector is more strong. So Mhm. just pick the country, just pick the place. Like I'm giving just an example, the people who have destiny number 7, when you do the total of the date of birth, if it comes to be 7, then they should definitely go to a foreign country. They should leave their birthplace. So they should Okay. either settle in a foreign country or somewhere near the water, then they prosper a lot, because 7 is the number of Ketu, and also 7 is a number showing lot and lot of water around you. So they should settle somewhere near the oceans, right? So if you are in India, settle near Mumbai, right? If you Mm. were here in US, then on the east coast, like New Jersey, New York, anywhere where there is a ocean nearby, right? Where there is a large water body nearby, right? So like Seven reminds me of the most successful Indian cricketer. I mean, one of the most successful Indian cricketer, and also, one of the most successful Indian cricketer captain. I would say hmm, Mahendra Singh Dhoni. Dhoni, So his yeah, lucky number is 7, and he's so yeah. successful. Yeah, Yes. go ahead. See, all the numbers are good. All Yeah, the numbers. So, one day we can do the show on the numbers also. But of course. so, if you are doing the hard work, I only say take the help of astrology just to know what direction is best for you, Mm-hmm. right?
hard work is definitely required. If the destiny, as I'm saying, if the destiny says that you will have a big car, you will have a Rolls Royce, then Yeah. again you know need to put an effort that you have to drive. Mm-hmm. And obviously if you have a driver, then also you will be sitting at the back. It's not that you can lie in your bedroom and enjoy the Rolls Royce, right? You need to get out of your room, you need to go down, you need to open the door of the car, and you need to sit. So hard work is required everywhere. You Mm-hmm. cannot do anything without the hard work. And again, if you keep on trying for something, obviously the universe will give it to you. Mm-hmm. And to take it faster, you can do the remedies, but Right. I always say that do the hard work in the field which you can get the maximum success. Mm-hmm. Okay. Okay. I hope that makes sense. Of course, it does. It does. And, hard work is the key to, I think, everything, right? Hmm. Yes, So, hard work is the key to everything. You yeah, need to do the hard work, and not only the hard work. See, I think last time also I said a rickshaw puller also do the hard work, yeah, right? So don't be a rickshaw puller. And then the multimillionaires also do the hard work. do the hard work. So Yeah. be a smart, hardworking person, Right. right? Just Mm-hmm. see what are the best options for you and go over there. If in your destiny it's written that you have to be a doctor, then why don't you try for something over there? If it Mm-hmm. is written, no, you have to be into the IT, then what are you doing in a med school? Like, Uh-huh. go over there, do the hard work so that you can have the maximum success, right? Yeah, Because some absolutely. planets are exalted, some are deviated in the chart, some are Mm. balanced. So just see what are the exalted ones who are Right. ready to give you maximum. Mm-hmm. It's something like, let's in a family say there are two sons, right? Uh-huh. The parents love, the father loves the elder son most, right? Mm-hmm. So if Mm-hmm. the elder son wants anything, so he should go to the father first, Yeah. right? If he will go to the mother, then obviously he'll say, please give me, please give me. She'll say, no, no, then back and forth, back and forth, back and forth. But when he'll keep on asking again and again, then mother will say, okay, take it, right? Yeah. So Mm. that is like what? Wastage of time, then mental stress, Yeah. physical stress, everything. Mm-hmm. And when he knows that father loves me, go to the father and take Mm-hmm. whatever you want to take. The bottom line is what? The bottom line for everyone is money, no? Of So course. just see what planets are ready to give you. Go and ask from them first, Yeah. Mm-hmm. right? And Yeah. if you have anything, then you can pursue that as your hobby, Mm-hmm. right? Of course. You Of course. need, yeah, Absolutely. yeah. So just go to those planets first who are ready to give you something, Okay. Okay. right? Well, well said, Dr. Deepika. Now, I would like to tell our lovely audiences that if you want detailed reading or consultation, you can reach Dr. Deepika Gupta at our immigration hotline number, which is 833 H1B visa 833 412 8472. You can just press the extension number 6, and or you can also mail us at immigrationtalkshow.com. Yes, here is the extension number, hotline number. You can press 833-412-8472. And to reach Dr. Deepika Gupta, what you have to do is you have to press the extension 6, and you'll be able to reach her. And you can also email us at help@immigrationtalkshow.com. And if you want project placement, you can press the extension 1. Well, after this, I would like to ask my next question from you, Dr. Deepika. I would like to know that can retrograde planets influence delays or obstacles in the visa process? Before you answer this question, I also have one, like a very basic question. So I always read it. If every time there's an eclipse, or recently solar eclipse happened, and every time there's an eclipse or anything happens, I always read Mercury in retrograde. And Hmm. so now It's it is going to retrograde affect right this, now. it is yeah, it is Yeah. going to affect this, it is going to affect that. So even on on different kind of channels, as in not only dedicated to astrology, but even if it's immigration or fashion related or anything, any social media, whenever I open those channels or open those pages, so they say, okay, Mercury is in retrograde now, it is going to influence your this work this way, this work this way. So I want to know from you, what exactly does this mean, Mercury in retrograde? If you can please explain before answering this question. Okay.
See, first of all, the channels have made astrology a drama. That's why, when you keep seeing those things, the people Mm. think it's a magic band. Yeah. 8 तारीख को होगा बुध वक्री। अरे हो जाएगा, तो क्या हुआ हो जाएगा, तो बताओ मुझे क्या हो जाएगा। लाइक इतने मिलियन ट्रिलियंस की जनता है पूरे वर्ल्ड Mm. में, क्या हो जाएगा, क्या सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या सबके लिए नहीं। सी, okay, you are Rajni, right? Mhm. You might be like, you are somebody's daughter, somebody's sister, somebody's niece, somebody's क्या कहते हैं aunt, somebody's elder sister, somebody's younger sister, right? Uh-huh. तो Mhm. क्या रजनी सबके लिए सेम है? नहीं। Yeah. अगर if let's say your father is scolding you, you won't speak a word, right? And you Yeah. will apologize, right? Right. But Right. if your younger sister is scolding you, you might be scolding her back, राइट। तो That's true. बात तो स्कोल्डिंग ही हो रही थी, पढ़ तो Mhm. डांट ही रही थी, बट जब फादर से पढ़ी तो आपने रिएक्ट नहीं करा, बट जब सिस्टर से हुआ छोटी तो आपने रिएक्ट करा। अब वही Mhm. रजनी है, डांट भी उसी को ही पड़ रही है, तो अलग Mhm. अलग रिएक्शन थे ना। ऐसे ही हर प्लैनेट आपके लिए एक अलग अलग रोल प्ले कर रहा होता है। Mhm. एक तो हो गया, एक तो मैं ये बात करूं, हाँ रजनी इज अ गर्ल एंड रजनी हैज ब्लैक हेयर्स एंड रजनी इज इंडियन, तो ये तो मैंने एक Mhm. जनरल बात करी, राइट। Mhm. तो वो तो जनरल हर ही प्लैनेट है, जैसे कि हम सन को गवर्नमेंट से कनेक्ट करते हैं, मार्स को हम अपने यंगर ब्रदर से कनेक्ट करते हैं। बट जब मैं बात कर रही हूँ कि रजनी एज अ डॉटर, रजनी एज अ सिस्टर, रजनी एज अ आंट, तो मैं फिर एक पर्टिकुलर रिश्ते की बात कर रही हूँ, वो सबके साथ अलग अलग है। तो उसी तरीके से जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो होता है तो उसका आपके हॉरोस्कोप से क्या रिलेशन बन रहा है वो मैटर करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मरकरी रेट्रो हो गया तो सभी के लिए ऐसा कर देगा। Mhm. मतलब ये तो वो बात होगी कि इफ आई से ओके रजनी इज गेटिंग स्कोल्डेड बाय इन हर हाउस होल्ड, तो शी इज गोइंग टू रिएक्ट इन द सेम वे, चाहे वो Yeah. ग्रैंड पेरेंट्स डांट रहे हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कोई छोटा या कोई राह चलता डांट रहा हो रजनी को, क्या Mhm. सबके साथ सेम रिएक्शन होगा? नहीं होगा, Not at all. राइट। तो उसी तरीके से प्लैनेट्स का भी रिएक्शन नहीं होता। सबसे पहले तो रेट्रोग्रेड क्या होता है? सी, Mhm. रेट्रो मींस उल्टा चलना। सो व्हेन एवर द प्लैनेट रेट्रोग्रेड्स, इसका मतलब वो कोई ऐसा नहीं है यूनिवर्स में चलने लग जाता है, बट Mhm. हाँ कि उसकी सन से एक पोजिशन आ जाती है जहां पे वो सन के साथ एक एक्सिस पे आता है, तो वो रेट्रो होना स्टार्ट हो जाता है, Mhm. राइट। तो वो उतना ही रेट्रोग्रेड है। नाउ लाइक लोग इतना रेट्रोग्रेड का हंगामा कर देते हैं। लेट्स से इसको एक बहुत इजी एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। सपोज करें आप अपने रूम से बाहर निकल रहे हैं, राइट। Mhm. इतने में मैंने आपको पीछे से आवाज दी, आपने पलट करके देखा, राइट। Mhm. तो Mhm. अब डिपेंड करता है आप रूम में कितना चल लिए। लेट्स से हमारा 10 by 10 का कोई रूम था, ओके। Mhm. तो Mhm. आप उसमें 5 फीट तक चल लिया, और एक हुआ आप पूरा 10 तक चले गए, एक हुआ आप जस्ट रूम के बिल्कुल एंड पे ही खड़े हुए थे, यू वर रेडी टू एंटर द नेक्स्ट रूम और आप तब पलटे, है ना। Mhm. अब अगर लेट्स से आप 5 फीट पे चले मेरे साथ, है ना, और मैंने आपसे कुछ मांगा था, आपको देने आना पड़ेगा मुझे, Mhm. तो वो डिस्टेंस कम हुआ। बट अगर आप ऑलरेडी सेकंड रूम में एंटर ही करने वाले थे तो वो डिस्टेंस ज्यादा हुआ, तो बिल्कुल। पोजीशन अलग अलग हो गई ना, Mhm. राइट। और सबके हॉरोस्कोप में वो अलग अलग होगा। Mhm. तो डिपेंड करता है सबसे पहले जो प्लैनेट रेट्रो हुआ है वो आपके लिए कौन से हाउस का ओनर है, फिर Mhm. कितना आपके हॉरोस्कोप में चल लिया है, उसकी पोजीशन क्या है, वेदर इट सिटिंग विद एनिमीज और फ्रेंड्स, उसके Mhm. आसपास कैसे लोग हैं। लेट्स से अब अगर मैं किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को, लेट्स से कोई समिट वाज हैपनिंग और मैंने एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को जिस कंट्री के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन है उसी उधर ही बिठा दिया उसी प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो अभी क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर authoritative personality with Mhm. the friend, again feeling very very happy। बट अब मैं उसी प्राइम मिनिस्टर को जिस कंट्री के साथ उसके सबसे वर्स्ट रिलेशन हो उसके साथ बिठा दूं, तो दो प्राइम मिनिस्टर, दो अथॉरिटी, बट अगेन नॉट इन अ गुड और एन एनर्जी, है ना, Mhm. नॉट बी कंफर्टेबल दो द प्राइम मिनिस्टर, राइट। Okay. Right. ये डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में वेदर द प्लैनेट्स आर सिटिंग विद द फ्रेंड्स, विद द एनिमीज, या विद समबडी विद whom they don't share even a positive vibe, not a negative vibe। तो किस तरीके के रिलेशनशिप में आपके प्लैनेट्स बैठे, और फिर जो बाहर रेट्रो हो रहा है उसका फर्क पड़ता है। ये थोड़ी है एक बार ये रेट्रो हुआ, अब जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स उसमें आ जाता है ओके एरीज का है, टॉरस का है, तो क्या सबके साथ हो जाएगा? मिलियंस होंगे एरीज, क्या उस दिन सबके साथ वो हो जाएगा? नहीं। Mhm.
आपके हॉरोस्कोप में वो प्लैनेट किस तरीके से बैठा है, और फिर जो बाहर हो रहा है उसका कैसे रिजल्ट आ रहा है। Right. न्यू So it जर्सी depends person to person, horoscope to horoscope. या Right. इसीलिए आई एम एक्सप्लेनिंग दिस रेट्रोग्रेड कि व्हाट इज दिस रेट्रोग्रेड इज एक्चुअली। Mhm. अभी न्यू जर्सी में अर्थक्वेक आया, राइट, अभी जस्ट No. 3-4 डेज बैक न्यू Mhm. जर्सी में आया। तो इंडिया में अगर आपके रिलेटिव है उन्हें फर्क तो पड़ेगा, ओ यू गाइज आर ओके, बट उन्होंने वो फील नहीं करा है। Mm. अब चैनल्स क्या दिखाते हैं, अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया, तो पूरी दुनिया को नहीं फर्क पड़ेगा, वो न्यू जर्सी न्यूयॉर्क के ही लोगों को फर्क पड़ने वाला है, Absolutely. राइट। बाकी Right. के लोग ये तो समझेंगे कि ओ तुमको आया, यू गाइज ओके, दे कॉल यू, दे टेक्स्ट यू, बट उन्होंने वो फील नहीं करा है, वो फील भी नहीं Mhm. कर सकते, और वो Mhm. आके चला भी गया। इवन अब न्यू जर्सी वाले भी नहीं फील कर रहे हैं। Mhm. तो यू नो पीपल मेड इट, 8 तारीख को शनि हो गए वक्री, इट्स नॉट अ ड्रामा, इट्स अ साइंस, लाइक बट इतना ड्रामा बना दिया I जाता है। think because of this creating, astrology as a dramatic. हाँ, या Uh, so that's या why I think people have started to have less like trust यस to यस astrology with astrology, right? सी आई वुड से ट्रस्ट भी, एंड देन पीपल टेक इट एज समथिंग, कुछ मैजिक हो जाएगा, आज रेमेडी करिए कल मैजिक हो जाएगा, ऐसे Uh, नहीं होता है। एंड देन समटाइम्स कुछ रेमेडीज होती है जो तंत्र से आई है। mhm. तंत्र इज समथिंग व्हाट, उसको मैं एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में बोलूंगी, इट्स समथिंग लाइक आप किसी को ऑपरेट कर दें, राइट। Mhm. तो आप वो क्यों चाहेंगे, और प्लीज ऐसी रेमेडीज में मत जाएं, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन सफर करती है। आप करके चले जाएंगे उस रेमेडी को, आपके लिए वो उस टाइम काम कर जाएगी, बट आगे वाली जनरेशन सफर करेंगी, क्योंकि आप उनका वो कर्मा जो आपने करा है वो उनको कंप्लीट करना ही पड़ेगा उस Right. साइकिल। तो इसलिए ऑलवेज डू द रेमेडीज जो वैदिक के अकॉर्डिंग सही हो, और जो मतलब एक तरीके से कर्मा के अकॉर्डिंग सही हो, Absolutely. डू So, दोज रेमेडीज so ओनली। Dr. Deepika, so can retrograde planets influence delays or obstacles in visa processes? बट रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स अगेन वो अच्छा भी तो कर सकते हैं। अगर मैं और आप वो 5 फीट के डिफरेंस पे हैं, तो आपके लिए Mm. कितना इजी है फटाफट से मेरे को अगर इफ आई एम आस्किंग यू समथिंग, तो आपको वो मेरे को हैंड ओवर करना कितना इजी है। Mm. तो इट्स नथिंग लाइक दैट कि रेट्रो हमेशा खराब ही करेगा, नहीं, रेट्रो कैन रियली डू वेरी गुड फॉर यू। Okay. लेट्स से इसको आप ऐसे भी समझ ले, लेट्स से कि जैसे मैंने प्राइम मिनिस्टर वाला ही दिया है ना, Mhm. अगर एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ दूसरा कोई एनिमी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, बट पीछे फ्रेंड बैठा है, तो अब ये रेट्रो हो गया ना कि वो टर्न बैक कर रहा है। तो Mm. रेट्रो होकर के वो बल्कि हैप्पी फील कर रहा है, वो इससे बात नहीं कर रहा, वो रेट्रो होके अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। हाँ. तो डिपेंड, जब प्लैनेट रेट्रो हुआ तो क्या पीछे वाले हाउस में आपका कोई फ्रेंड प्लैनेट था, तो आपको अच्छा लगा। भले ही अभी पोजीशन अच्छी नहीं है उस प्राइम मिनिस्टर के लिए, दो अथॉरिटी है कि साथ में इधर भी, लेट्स से अगर कोई इधर भी बैठ गया जिसके साथ नहीं है बॉन्डिंग, इधर भी कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा बैठ गया, तो कितना, प्राइम मिनिस्टर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर यू डोंट फील गुड, राइट। Yeah, बट अगर absolutely. पीछे फ्रेंड्स बैठे हैं और आप रेट्रो हो गए, तो यू विल फील गुड, Uh-huh. राइट। Absolutely. Yeah. तो रेट्रो को प्लीज ऐसे मत लें कि इट ऑलवेज क्रिएट डिलेज, इट कैन रियली गिव गुड रिजल्ट्स आल्सो। It Okay. depends what kind of horoscope you have. Wow. Hope So, I made this thing clearer of the retrograde. no, thank you so much. Yes, it is now like very much clear. Even I had this confusion what exactly is Mercury retrograde and what does this retrograde exactly mean in astrology. So, thank you so much for clearing this up. And everyone, I would like to know that I would like to tell you actually that we have a lot of questions pouring in. And Deepika ji, also to you, also a lot of questions are pouring in from the audiences. So, I'm but very before we fast. address those, we have a special offer for our viewers. If you would like Dr. Deepika to analyze your horoscope live on air, don't hesitate to send it in. We respect your privacy. So if you prefer to remain anonymous, just let us know. We'll ensure your details are kept confidential. Okay. And also, Dr. Deepika also does face reading. So if you want your face to be read by Dr. Deepika, what you can do is we are sharing a link here on the chat. See, you must have received this link. If you would like to, if you would like Dr. Deepika to read your face, please join us through this link. And okay,
So now, after this, and if you want your horoscopes to be read by Dr. Deepika, what we are going to do is we you can send your horoscope live on air to us. And if you have privacy concerns, don't worry, we'll keep your details confidential. So send your horoscopes. And right now, what we are going to do is we'll quickly go for a break. And after the break, we are going to take our audience's question. Will Is it okay, Dr. Deepika? Yeah, 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 definitely okay. Okay, sure. So let's go for a short break. Everyone, you just stay tuned with us. Don't go anywhere. We'll be right back in about 30 seconds. So stay with us. You an IT consultant seeking a new opportunity? We offer job placement services for US citizens, green cards, EADs, and visa holders. We also sponsor various work visas like H1B, E3, TN, and green cards. 20 plus years of experience in the industry. Exceptional employee benefits. Highly rated by our employees. Global presence with 200 plus recruiters and direct clients. Connect with us. Call us on the number 732-707-9151 or mail us at rajni@higheritpeople.com or visit our website www.higheritpeople.com. All right, welcome back. Yes, the break is over. Welcome back, viewers. We hope you enjoyed that short break. Now, let's dive back into our session with Dr. Deepika. And let's now quickly take up our audience's question. Are we Yeah, ready? yes. Okay, so the first question that I have for you is from Madhu, and Madhu wants to know that all daily horoscopes, monthly and yearly online, are true. If yes, which one is the best? What do you have to Okay, say? I recently gave answer for this that like millions of people only. Let's say if I talk about any sun sign, Aries, Taurus, millions of people. तो क्या सबके साथ वो हो जाता है? नहीं. That does not happen, right? So it totally depends on your moon sign, like कि आपके horoscope में किस तरीके से planets है. तो ये जो daily horoscopes आते हैं, at least I don't believe in that. Not at all. तो इट डिपेंड्स आपके हॉरोस्कोप में क्या है, व्हाट दशा यू आर गोइंग थ्रू, व्हाट काइंड ऑफ प्लैनेटरी पोजीशन, देन व्हाट दशा, देन व्हाट इज द ट्रांजिट, राइट? Mhm. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. तो उसके बेस पे आपका डे कैसा जाएगा, दैट कैन बी डिसाइडेड. बट दिस कैन नॉट बी डन के एक वो एक जर्नलाइज होती है प्रिडिक्शन. तो Mhm. दैट इज फॉर वेरी जर्नल थिंग्स, लाइक यू कैन नॉट टेक मेजर डिसीजंस ऑफ योर लाइफ बेस्ड ऑन दैट डेली हॉरोस्कोप्स. नो, Okay. आई डोंट So, advise it. Madhu, not at all. Don't believe in everything that you read online or that you see online. Yes. So, like, wait for experts like Dr. Deepika. And if you want to get in touch with her, or if you want to, show your horoscope to Dr. Deepika, so you can also send your horoscope to us. She can do the reading here. And now let's take Amjad's question. So, Amjad wants to know that is there a difference in the perceived effectiveness of astrology on visa approvals between visa categories? Example, H1B, student visas, tourist visas. What do you have to say? Yes, it can be done. See, it depends on the horoscope. What kind of a horoscope you have. So, the 10th house actually tells about the profession. So, what are the planets in the 10th house? Then it can be decided whether you will be having H1B, student visa, tourist visa. So, Mhm. see, if let's say if any relation of Jupiter, Mercury, Venus with that, then the student visa is best. If the Saturn is well placed over there, then H1B can be we can go ahead. If there are like if Saturn afflicted over there with the moon over there, again the sign also matters a lot. And what is the play actually the house owned by the Saturn, moon, and
all the planets I'm saying. So depending on that, then it can be a tourist visa, it can be a short travel just for the fun. So usually the Mercury is involved in that. So we have to see what kind of planets are there, and depending on that, then you can go. Even see for the this US, many people file asylum also. So there are the combinations of that also in the horoscope. So yes, there is definitely as a different category visa have different combinations. Okay. So, Amjad, I hope you have got your answer. Thank you so much for posting it on YouTube. And I hope you're enjoying the show. And now, so Prem Lal is watching us on Facebook and is sending us a lot of hearts, if you can see. Thank See, you. yeah, is sending us a lot of hearts and lot of emojis. This namaste and thank you, I think it, which it means, and this salute one. So thank you so much, Prem Lal, for loving the session. And we hope you, if you want your horoscope to be read by Dr. Deepika, you can send it to us. And now let's take our next question. The next question, okay, so yes, again send a emoji to us. Premlal, thank you so much for this. Now let's take Ganesh Paul's question. So Ganesh wants to know, what planetary transits or aspects should I be aware of when planning my relocation to the United States for my H1B job? What do you have to Okay. say? So, see, first of all, let's clear this point also. What is actually the transit and what is dasha? लोग कई बारी बोलते हैं Mhm, ट्रांजिट में ऐसा हो रहा है बट दशा नहीं थी, या दशा तो कह रही थी बट ट्रांजिट नहीं था. सो mhm, सी जो ट्रांजिट और दशा ऐसे हैं, जैसे लेट्स से अगर हम वो लेटर्स वाले टाइम पे जाएं, एंड इफ आई राइट यू अ लेटर, देन mhm, ओनली पोस्टमैन कैन डिलीवर यू, राइट? तो डिलीवरी कब होगी? जब अगर मैंने लेटर लिखा है तो. mhm, अदरवाइज अगर पोस्टमैन इज कमिंग डेली टू योर हाउस और मैंने कोई लेटर लिखा ही नहीं, तो क्या फायदा है अगर पोस्टमैन आ भी रहा है ना? तो हमारा जो है इसमें ट्रांजिट एंड दशा जब दोनों फेवर करती है, इवेंट विल टेक प्लेस एट दैट टाइम ओनली. और मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो अगेन देखिए, फोर्थ हाउस एफ्लिक्टेड होगा. फोर्थ हाउस हमारे घर का है, वो एफ्लिक्टेड क्यों होगा? तभी हम अपने घर से दूर जाएंगे, राइट? देन एर्थ हाउस इज लाइक mhm, क्रॉसिंग द बॉर्डर्स, डीप वाटर्स, लार्ज वाटर बॉडीज. तो अगर एर्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट है हमारे टेंथ हाउस के साथ, तो हम फॉरेन कंट्री जाएंगे. देन mhm, ट्वेल्थ हाउस इज गोइंग टू द फॉरेन लैंड. तो 4 8 12 का कॉम्बिनेशन होता है. और या 4 8 12 का कॉम्बिनेशन मिलता है जो लोग फॉरेन सेटल होते हैं. एंड यूजुअली मून इज विद राहु और केतु, एंड देन सैटर्न इज कनेक्टेड टू देम, एंड द टेंथ लॉर्ड इज ऑल्सो कनेक्टेड टू देम. तो जब ये सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो ऐसे लोग यूजुअली सेटल होते हैं. अब लेट्स से इसमें कोई भी एक चीज एफ्लिक्टेड हो जाए, तो क्या mhm, होगा? आप फॉरेन तो जाएंगे बट आपको प्रॉब्लम होगी वहां पर जाकर के. अब mhm, किस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, वो हम प्लैनेट देख लेते हैं कि वहां पे प्लैनेट कौन सा है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी आपको. लेट्स से कि आपका फोर्थ हाउस ही अफ्लिक्टेड है, तो आप फॉरेन तो चले गए, बट अगेन वहाँ मतलब पहले तो वीजा होने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बिकॉज फोर्थ लॉर्ड इज योर ओन हाउस, योर ओन कंट्री. तो पहले तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी, आपको अपने ही कंट्री में फाइलिंग में प्रॉब्लम्स होंगी. नेक्स्ट कंट्री mhm, तक तो बात की बात है, पहले अपनी कंट्री में प्रॉब्लम होगी. फिर कैसे भी जब वो दशा एंड ट्रांजिट फेवर करेगा, आपने रेमेडीज करी, आप उधर चले भी गए, तो वहां जाकर के अगेन स्टेइंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. तो एक्चुअली क्या चीज होगी वो चार्ट से इजीली निकाला जा सकता है. Wow. Okay. So, Ganesh, if you want, so you can send us your chart, uh, date of birth, time of birth, and place of birth. You have Yeah. to send these three details, and Dr. Deepika will be able to help you with your horoscope reading. Okay. So, thank you so much for your question, Ganesh. I hope you have got the answer. Now, let's quickly move to Jolti. So, what Jolti wants to know is, how do individuals who believe in astrology navigate the visa application process differently from those who do not? Okay. So see, in this way, in this case, I would say कि just they do the remedies as per their horoscope. जैसे अभी मैंने बोला कि मून एंड राहु, लेट्स से किसी का मून वीक है, तो उनके हॉरोस्कोप में मून कहाँ का लॉर्डशिप लेकर के है, किन प्लैनेट्स के साथ बैठा है. अगर हम as per that, if we do the remedies, then the process becomes a little easier. Mhm, So mhm. there the remedies work, and there, if you are believing in astrology and you do the remedies as per that, then that definitely matters. Okay, okay.
All right. Okay. So, Jolty, I hope you have got the answer now because we have a lot of questions coming in. So, I don't want to miss because in the last episode, we were able to miss a couple of them, and which I'm sure, the audiences didn't like. So, today I'm trying not to ask too many questions from my own side and, take the audience's question. So, the next Okay. is from Deepak Kumar. So Deepak wants to know, how do factors such as timing of application submission, birth chart analysis, and astrological remedies play a role in visa approval beliefs? अच्छा, सो सी ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट इनकी सेम है। लैंग्वेज चेंज है, राइट? हम्म, सारे क्वेश्चन सेम है। तो अगेन देखें, मैं एक बार इसको दोबारा आंसर करती हूँ कि लेट्स से किसी के बर्थ चार्ट में टाइमिंग था कि आफ्टर सितंबर उनका वीजा अप्रूवल होगा, बट एप्लीकेशन का टाइम तो मई है, तो अभी कैसे कर सकते हैं? वी कैन नॉट से कि नहीं नहीं अभी आप सितंबर तक रुको। तो व्हाट वी डू इन दैट केस कि हम उस मई में देखते हैं व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू फाइल योर एप्लीकेशन, व्हाट इज द बेस्ट मुहूर्त, व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू डू दैट। उसी के अंदर अभी हमको देखना पड़ेगा, एंड देन जो भी प्लैनेट सितंबर तक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है उसकी रेमेडीज कर दें, तो एटलीस्ट आप कुछ परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव एनर्जी अपने लिए क्रिएट करते हैं, राइट? ओके। क्योंकि देखिए ये सारे क्वेश्चन सेम है, जस्ट हाँ। लैंग्वेज चेंज है, सब वही एक बात पूछ रहे हैं। तो एंड दूसरी बात एक और जो इन्होंने पूछी है कि बर्थ चार्ट एनालिसिस करा हमने, एप्लीकेशन सबमिशन एंड एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज यहाँ पर आपका रोल प्ले कर जाती हैं कि जो भी प्लैनेट ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा होगा, जो मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया सितंबर तक, हम अगेन ये भी देख लेते हैं कि वो कौन से साइन में बैठा है, वेदर इट्स इन अ फायर साइन, इन एयर साइन, इन अर्थी साइन, इन वाटर साइन। तो हम उसके अकॉर्डिंग उसकी रेमेडी करा देते हैं। लेट्स से एयर साइन है तो आई से चैंट मंत्रास, लेट्स से अगर वाटर साइन है तो आई से कि ये मतलब आप कहीं पे जल प्रवाहित करते हैं। अगर अर्थ साइन है तो यूजुअली कहा जाता है कि आप धरती पे बैठ के हवन वगैरह कर सकते हैं। इवन अगर फायर साइन भी इंक्लूड है तो किसी भी तरीके का हवन वगैरह करा जाता है। तो उस तरीके की रेमेडीज बताई जाती हैं जो उस प्लैनेट को हील होने में हेल्प करती है। ओके। पर डॉक्टर दीपिका, हाउ डू वी फाइंड आउट? कैसे पता लगाएं कि कौन सा साइन है, अर्थ साइन वो है? पता लग जाता है, वो जिन्हें भी एस्ट्रोलॉजी आती है वो फर्स्ट डे क्लास में वही बताया जाता है कि कौन से साइन किस उससे ओके। रिलेटेड, राइट? ओके। जैसे देखिए अभी हमने फोर्थ साइन की बात करी, राइट? जो भी यहाँ एस्ट्रोलॉजी जानते हैं व्यूअर्स वो एकदम से रिलेट कर पाएंगे। देखिए 4, 8, 12 हमारे वाटर साइंस होते हैं, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, दे आर वाटर साइंस, राइट? तो 4, 8, 12 ये ट्राइन्स में होते हैं सारे साइंस, वो सब एक ही एनर्जी के होते हैं। जैसे 1, 5, 9 विच इज एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, वो सारे के सारे फायर साइंस हो गए। 2, 6, 10 हो गए हमारे अर्दी साइंस हो गए। फिर 3, 7, 11 अगेन जेमिनी, लिब्रा, इक्वेरियस, वो हमारे एयर साइंस हो गए। तो 4, 8, 12 जो है हमारे ये वाटर साइंस होते हैं। आप देखें कितनी सुंदरता से एस्ट्रोलॉजी बनी है कि फोर्थ हाउस जो होता है वो क्या है, आपकी मदर का हाउस है, राइट? एक बच्चा जो है वो कहाँ पर आता है, कम्स इनटू द वूम्ब ऑफ द मदर, जो कि अगेन पानी है, वाटर बैग के अंदर आता है। एंड 12th हाउस जो आपकी डेथ का घर है वो भी वाटर है। तो क्या होता है, जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो उसके बाद उनकी जो अस्थियां हैं वो गंगा जी में प्रवाहित की जाती है। तो आप पानी में आए थे और आप पानी में ही चले जाते हैं, वाओ। राइट? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो उल्टा लटका हुआ होता है, राइट? और हाँ। उसके दोनों जो कान है ना, वो हाथ है उसके कानों पे होते हैं। तो वो, अगर हम इसे स्पिरिचुअलिटी की वर्ल्ड में देखें तो ये माना जाता है कि कान पकड़ के माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दो ईश्वर, मैं इस जन्म में जब आऊंगा तो आई वोंट बी डूइंग एनी मोर बैड कर्मास, मैं अपने आप को हील ही करूंगा और ताकि मैं ऐसे कर्मास करूंगा कि मैं इस जन्म के और मरण के चक्कर से बाहर निकल जाऊं, ओके। राइट? बट सब यहाँ पर आकर के फिर फंस जाते हैं। तो एंड 12th हाउस इज अगेन वाटर, तो आप पानी में आए थे और पानी में ही चले जाएंगे। Okay. Wow. I mean, nobody can, even I think only after you study astrology, you can get this knowledge, this much depth of knowledge. I don't think if you don't read astrology or if you don't believe in these, in spirituality or in these things, you would be able to get such depth of knowledge, right? Yes, see, astrology is deeply, deeply connected to spirituality because astrology आपके कर्मास की ही बैलेंस शीट है। आप ही करके आए हैं, आप ही को भुगतना है। अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी, But राइट? Dr. Deepika, I'm so sorry to interrupt again, but I have this quick question. So what happens is, because
Indians, they follow a different chart. Hmm. Okay, they follow this their kundali, kundali we say, no, so Kundali, yeah. they follow their kundali. Hmm. And in the kundali, so the sign that you get is basically from your name, or I think date of birth or something like that. I'm not Mhm. exactly sure. I mean, you are the better person who can tell us about this. And but if we follow the English chart, so it says if you're born from this to this particular date, then you are this sign, and if you're born from this to this particular date, then you're this sign. But if we follow the Indian chart, Indian kundali, so it is different, Yes. right? Very good question again. So See, which one तो to believe वेस्टर्न, actually? या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है वो सन साइन पे चलती है. देखिए Hmm. सन क्या है, एक हाउस में 30 डिग्रीज है, राइट. Hmm. सन 1 डे में 1 डिग्री चलता है, तो इसलिए सन एक पूरे हाउस में फॉर द 30 डेज रहता है. तो Hmm. वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स वर्क ऑन द सन साइन, तो वो ये बात बोलते हैं कि इस 30 डेज में जो भी बॉर्न हुआ वो सब इसी साइन के लोग हैं, Oh. राइट. ओके. Hmm. बट हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, हम मून साइन पे वर्क करते हैं. तो मून जो है वो 2.5 डेज एक साइन में रहता है, राइट. और Hmm. वो हर रोज एट द नाइट वो एक कॉन्स्टेलेशन में होता है. ये भी मैं किसी दिन कहानी सुना दूंगी आपके शो पे कि कैसे दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां चंद्रमा से भी आई गई थी. और वो इसलिए 27 कॉन्स्टेलेशन में एक एक रात रहते हैं, क्योंकि उनकी वो 27 वाइफ्स हैं, तो वो एक एक नाइट सबके साथ स्पेंड करते हैं. ठीक है. तो वी वर्क ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो कि चंद्रमा के ऊपर बेस्ड होती है. इसीलिए हम बोलते हैं कि इवन अगर ट्विंस भी बॉर्न हुए तो वो अलग है. बट Hmm. वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है कि हम ये पूरे 1 मंथ को एक ही वो मान लेते हैं. लेट्स से अगर कोई एरीज है, तो जितने भी लोग एरीज के उसमें बॉर्न हुए ना, वो सारे के सारे सेम उसके हैं. बट ऐसे नहीं Hmm. होता. हाँ, वी डोंट टेक दिस थिंग लाइक दैट. So which one should a person believe? The sun sign astrology or moon sign? सी, मून साइन एस्ट्रोलॉजी इज मच मच डीपर, क्योंकि हम तो ये बोल रहे हैं ना कि अगर कोई ट्विंस भी बॉर्न हुए तो उनके भी फेट में डिफरेंस हो सकता है. Hmm. तो इसलिए मून साइन इज मच डीपर. तो आज मॉर्निंग में आई टुक क्या कहते हैं फ्यू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स, उन्हीं की चार्ट रीडिंग करके दी, एंड दे वर आल्सो लाइक दैट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग वेरी वेरी डीप. Wow. Okay. Amazing. If the Western astrologers are also saying this thing, then it means the Vedic Yeah, yeah. astrology. No, no, they totally agree. Each one of them, like at least whom I have met in last 7 to 8 years, everybody says that Western astrologers, that Indian astrology, the Vedic astrology is much, much more deeper, Hmm. much more accurate, much more deeper. Because it doesn't always, it never just counts your date of birth. It always counts your date of birth, time of birth, and place of birth, right? Yes, But yeah, Western astrology only counts your date of birth. date of birth, yeah, yeah. Right. Okay. So next question we have is from Emmanuel, and Emmanuel wants to know: do individuals consult astrologers or use astrology to time their visa application submission for better chances of approval? I'm sure you must have Yes, had if a they lot of believe in, cases yeah, like if these. they believe in astrology, yes, they definitely come and consult about that. And they want to know if some remedies can be done so that, their visa application gets selected. Yes, definitely. But obviously, आपका belief system होना चाहिए, right? Hmm. Hmm. Absolutely. So next question is from Mithilesh Raj, and Mithilesh wants to know: how do visa applicants balance rational decision making with astrological beliefs during the application process? ओके, अगेन सेम क्वेश्चन. देखिए, अगर लेट्स से इफ यू हैव टू फाइल इन मे, यू हैव टू फाइल इन मे, यू कैन नॉट डू Hmm. एनीथिंग अबाउट इट. जस्ट गेट योर हॉरोस्कोप चेक एंड जस्ट सी कि क्या चीज है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उस प्लैनेट की आप रेमेडी कर ले, तो दिस विल बी अ वेरी रैशनल अप्रोच. यू कैन नॉट स्टॉप, लाइक सी, कई बारी क्या होता है, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, एस्ट्रोलॉजर्स हों, जैसे आजकल क्या हो गया, किसी को कुछ ना समझ आए ना तो ये कह दो कोविड की वजह से हुआ है, राइट. कोविड की वजह से हो गया है ना. तो इसी तरीके से क्या होता है, कई बार लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा होता तो वो कुछ भी बोलते हैं. मैं Hmm. एक बहुत आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए बड़ा ही अप्रोप्रिएट आंसर होगा. आई वेंट टू अ फैमिली, तो देयर
everybody could make out, though they were very old age couple, but everybody could make out that, husband has some special place for her wife in his heart, right? तो अभी because they are very rich people, तो क्या होता है, लोगों को खुश करना होता है, तो पता नहीं किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनको कभी बहुत साल पहले बात बोल दी होगी कि आपके पास जो भी फाइनेंशियल थिंग्स है ना, इज जस्ट बिकॉज योर वाइफ। तो Oh. उसके बाद से उनके दिमाग में वो बात सेट हो गई, ये मेरी वाइफ की वजह से ही मेरे पास पैसा है, तो वो उस वाइफ की एक स्पेशल प्लेस बन गई, राइट? तो Hmm. और जबकि ऐसा नहीं है। आप खुद सोचो, उनके अपने ही हॉरोस्कोप में ऐसा योग होगा ना कि ही कुड एंजॉय, तभी तो ही कुड एंजॉय। आपके Hmm. अगर एक हस्बैंड है, उसके हॉरोस्कोप में लिखा है उसको एक अच्छी वाइफ नहीं मिलेगी, तो फिर उसको ऐसी वाइफ कैसे मिल सकती है कि जिसका हॉरोस्कोप बहुत अच्छा हो? Hmm. तो ये बेकार की बातें बन जाती है, ये फिर एक एक गलत बिलीफ सिस्टम, सुपरस्टिशन क्रिएट हो जाता है। सुपरस्टिशन क्रिएट होता है। अगर मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि आई विल हैव चिल्ड्रन हु विल बी वेरी ओबीडियंट टू मी, तभी तो ऐसे Hmm. चिल्ड्रन आएंगे मेरे पास। Hmm. या ऐसा तो नहीं है कि मेरे हॉरोस्कोप में तो लिखा था, बट बिकॉज पता नहीं कैसे मैजिक हो गया और मेरे पास वैसे बच्चे आ गए, वो मेरे हॉरोस्कोप में भी लिखा था, Hmm. राइट? तो क्या होता है, लोग एक डिसबिलीफ, ऐसी बेकार की बात, एक सुपरस्टिशन फैलता है। तो आपके भी चार्ट में वो चीज होती है। अब जैसे इन्होंने बोला रैशनल डिसीजन मेकिंग, तो प्लीज बी रैशनल, यूज एस्ट्रोलॉजी एज अ गाइडिंग टूल, नॉट एज द ड्राइवर, एज अ गाइडिंग टूल कि आपको लेके जाएगा। जस्ट सी क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं, कौन से प्लैनेट्स वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने कहा, अगर आपके पापा प्यार करते हैं ना, तो जस्ट गो टू हिम फर्स्ट, आस्क फ्रॉम हिम, वो इजीली दे देंगे। तो Hmm. कौन से प्लैनेट्स पे अप्रोच करना है, कौन से को नहीं करना है, और जो नाराज है उनको कैसे हैप्पी करना है। देखो, कोई आपसे कितना ही नाराज हो, राइट? Hmm. कितना भी नाराज हो, इवन अगर आप भी किसी से नाराज हो, कुछ सोच के देखो रैशनली। अगर वो रोज आकर के आपको हेलो करना स्टार्ट करे, आप शायद फर्स्ट फ्यू डेज उसको रिप्लाई नहीं करेंगे, हो सकता है देख के मुंह इधर कर लें, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ नाराजगी। बट Hmm. धीरे धीरे टाइम आएगा, आपको लगेगा आप हल्का सा हेलो बोलना स्टार्ट कर देंगे, धीरे Hmm. धीरे 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 शायद स्माइल भी पास करेंगे। तो Hmm. हेलो बोलना क्या हुआ, जो प्लैनेट भी आपसे नाराज है उसको नमस्ते ही करना स्टार्ट कर दो, वो प्लैनेट रिवर्ट बैक करेगा, चाहे वो कितना ही हाँ, नाराज है आपसे। और नाराज क्यों हुआ है? क्योंकि आप ही ने कुछ गलत करा होगा ना, आप ही ने कोई हुँ, पास्ट बर्थ में कुछ कर्मा ऐसा करके आए ना कि उस प्लैनेट ने कहा नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव। जैसे राहु इज द प्लैनेट ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, राइट? तो ओके। इट्स लाइक पेटर्नल ग्रैंडफादर, राइट? तो हुँ, अगर राहु दादा का कारक है, केतु आपके नाना का कारक है, मेटर्नल ग्रैंडफादर, तो हो सकता है उनके साथ कुछ गलत करो, इसीलिए कुंडली में गलत बैठ गए। ऐसा हुँ, तो नहीं है ना कि उनके दिमाग में था नो नो मेरे को तो इसकी कुंडली में गलत ही बैठना है, ऐसा तो कोई प्लैनेट करेगा नहीं, ओके। राइट? तो आप उनको नमस्ते ही करना स्टार्ट कर दो, नवग्रह टेम्पल में जाके नमस्ते ही करना स्टार्ट कर दो, सॉरी बोलना स्टार्ट कर दो। टू द प्लैनेट और टू योर टू द, ग्रैंडपेरेंट्स? ओके। नहीं ऑब्वियसली यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स को देखो, रेमेडी क्या हो जाएगी, ग्रैंड पेरेंट्स को ज्यादा करो, क्योंकि आप पास बर्थ में जाके तो ठीक नहीं कर सकते, बट आप हुँ, नवग्रह टेम्पल में जाके उस प्लैनेट को नमस्ते करके सॉरी बोलना स्टार्ट कर दो, वो प्लैनेट रिजल्ट देने लग जाएगा, वॉव! राइट? हुँ, हुँ, रैशनली सोचो, टेक एस्ट्रोलॉजी एज योर गाइडिंग टूल। अच्छा, इस फील्ड में मेरे लिए ऑप्शंस है, दीज आर द गुड प्लैनेट्स, दे विल डेफिनेटली गिव मी, ये मेरे को थोड़ा सा सॉरी बोलने पे देंगे, ये मुझे बिल्कुल नहीं देंगे। तो उस चीज को, एनर्जी को चैनलाइज करो, हुँ, मतलब उसको एक मैजिक मत समझो प्लीज, हुँ, हुँ, राइट? mhm. Okay. Well, thank you so much for answering this question in so much detail, Dr. Deepika Mithilesh. I hope you have got your answer. Now, Sabine is here. Sabine wants to know something, and she has posted this on YouTube, and she wants to know my H1B is in audit in a DOL, awaiting USCIS response. Please suggest me the remedies. My zodiac sign is Aries. अच्छा, तो अभी मैंने इसका आंसर दिया कि वो 1 मंथ में, नाउ शी इज टॉकिंग अबाउट द सन साइन, राइट? क्योंकि Mhm. एरीज, अब पूरे 1 मंथ वाले लोग एरीज हैं, तो सारे एरीज के लिए सेम रेमेडीज नहीं हो सकती। आई नीड टू हैव योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, एंड सी आई कैन डेफिनेटली ऑन द लाइव चैनल लेट यू नो कब होगा कब नहीं होगा, बट फॉर द रेमेडीज अगेन आई हैव टू एनालाइज, विच विल टेक फ्यू मिनट्स, राइट? वो Yeah. देख करके एंड देन आई कैन गिव यू द रेमेडीज। So, Sabine, if you're watching us live on YouTube right now, also, so what you can do is you can send us your date of birth, time of birth, and place of birth. And with the help of these, Deepika ji is going to, read out your horoscope and is going to give you help. All right. So now
The next question is from Pradeep, and Pradeep wants to know that are there any specific rituals or practices from astrology that could support me during the H1B visa process? No, again, it depends on your horoscope that you know what rituals you need to do, yeah, what kind of a remedies you need to do as per your horoscope. So for every individual, it's going to be different. It cannot be कि हाँ चलो सबके लिए सेम है ये तो कर ही लो ताकि हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. बाकी अगर एक जनरल में मैं बताऊं तो यस आप कोई भी देवस्थान पे जाकर के वहां पर या तो किसी को कुछ खाना खिलाएं कहीं भी देवस्थान पे जाके. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी मस्जिद, गुरुद्वारा, टेम्पल, कुछ भी हो वहां पर जाकर के उनको खाना खिलाएं. एंड देन डोंट मेक आउट स्टोरी ऑफ इट. करते इतनी सी रेमेडी है उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पे रील्स बना के मत दे. जब भी किसी को कुछ दें तो आपके बोलते हैं ना वो राइट हैंड को भी ना पता लगे कि लेफ्ट हैंड ये कर क्या है. मेक दैट सीक्रेटिव, तभी वो वहां तक पहुंचता है, वरना वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होती है और वो चेन ब्रेक होता है. Okay, so even if you're doing a good deed or if you're helping the poor and needy people, don't post it on social media. Don't scream and tell, right? यस, देखो इसमें दो चीजें हैं. Hmm. एक तो आपने कुछ करा और आपने उसका जितना भी आपने वो गुड कर्मा अपना करा आपने वो ईश्वर को अर्पण कर दिया, राइट. फिर Hmm. वो उनके हाथ में कि वो आपको कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, उसका कितना रिजल्ट दे रहे हैं. आपके इतने करेगा भी वो इतना रिजल्ट दे सकते हैं क्योंकि वो पावर उस डिवाइन के हाथ में, वो पावर उस यूनिवर्स के हाथ में, राइट. Mhm. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन. बट जब आप उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो आप ऑलरेडी क्रेडिट ले चुके हैं अपना. आपने 10 लोगों से वाहवाही ले ली, तारीफ, थम्स अप, सब कुछ ले लिया, बात खत्म. Okay, okay. Done. So, आपने कर लिया, आपने खुद को अपने आप ही रिजल्ट दे दिया उस चीज का, राइट. तो लेट गॉड गिव यू द रिजल्ट ऑफ द थिंग ऑफ अ गुड कर्मा mm, विच यू हैव डन इंस्टेड ऑफ पीपल एंड यू योरसेल्फ गिविंग इट द रिजल्ट. ओके, तो तारीफ अगर आपको चाहिए तो आप सोशल मीडिया पर डालो, लेकिन अगर आपको इफ यू वांट द रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड साइड, सो जस्ट वेट फॉर गॉड. या Because he has already seen what you did. You don't have to show it on social media to the people. यस एग्जैक्टली. बट आजकल लोग नहीं समझते हैं. दे कीप ऑन पोस्टिंग, लाइक इतना सभी कुछ देते हैं, दे कीप ऑन पोस्टिंग, सी आई डिड दिस. तो Yeah, आप खुद को ही रिजल्ट दे रहे हैं. तो जस्ट वेट, हैव पेशेंस, हैव right. विजडम, लेट यूनिवर्स गिव यू द रिजल्ट ऑफ दैट. Yeah, exactly. Exactly. Well, the next question that we have is from Anaswara. So, Anaswara wants to know, can consulting astrologers help individuals navigate the US visa application process more successfully? यस, अगेन इट शुड बी इन योर हॉरोस्कोप. पहले तो वो योग होना चाहिए आपके हॉरोस्कोप में. सो इट शुड बी इन योर हॉरोस्कोप कि यस यू कैन गो टू अ फॉरेन कंट्री, राइट. और द Mhm. सेकंड थिंग इज कि उसके बाद देखेंगे कौन से प्लैनेट्स हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं, व्हाट आर Mhm. द गुड टाइमिंग्स फॉर यू. तो और एंड देन व्हाट काइंड ऑफ अ वीजा विल बी बेटर फॉर यू. अगर Mhm. एक टाइप का नहीं हो रहा तो कैन वी गो इन सम अदर फील्ड एंड देन ट्राई द प्रोसेस. तो दैट डिपेंड्स ऑन द एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप. Okay. Okay. All right. Thank you so much, Anas, for posting your question. Now, let's quickly move to Sunil's question. So, Sunil wants to know what are the best astrological alignments for a successful H1B visa application? I Okay, think, 10th lord should be very much strong, the 8th lord, the 12th lord. These three lordships should be very, very strong, and then the other combination should be there. Like the Saturn should be good, the moon should be good, the Rahu and Ketu should be good. If these all are in alignment, then definitely successfully आपका visa approval हो जाता है. And Dasha should be in aligned to this. wow. Okay. So, Sunil, you have got the answer now. You know what should be in alignment to get the successful H1B visa application. Now, let's move to, I think, Vishnu Singh. Did we take Vishnu Singh's question? Can astrology provide insight into the timing of when I should submit my H1B visa application for the most favorable outcome? Yes, definitely. The astrology can provide that insight after looking at your dasha system, that what dasha is coming and what dasha is actually favorable for you. Okay. All right. So, I think one last question we can take. Did we take Deepak Kumar's question? Deep, Hmm. one last. Just
Yeah. After this, how do factors such as timing of application submission, birth chart analysis? I think we already took this, right? We took this. Yeah, we We took have, this. yes. So let me wind up this thing. Okay, Uh-huh. definitely astrology can help after Mhm. seeing your dasha and everything. But सबका horoscope अलग होता है तो उसके हिसाब से चलता है. It cannot be कि आपने एक sun sign post करो और उस पे हो जाए. हर किसी का horoscope अलग है. And please don't get afraid by the retro planets. Retro planets sometimes give you such big results, good results. Mhm. तो एस्ट्रोलॉजी वो नहीं है आज है 8 तारीख और आज होने वाला है कुछ नहीं. वो एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, आप ही के किए हुए कर्मास है. तो Mhm. प्लीज इन फ्यूचर ऑल्सो डू गुड कर्मास, क्योंकि प्लैनेट्स डेफिनेटली रिवर्ट बैक करते हैं जब वो देखते हैं अच्छा पास्ट में किसी इंसान ने गलत करा बट अभी अच्छा करा है. जैसे कि आप स्कूल में जब थे तो टीचर भी बोलती थी ओके लास्ट एग्जाम्स में अच्छा नहीं करा बट स्टिल वी हैव टाइम, डू गुड, फोकस ऑन योर स्टडीज, तो ताकि फाइनल्स में अच्छे नंबर्स आ जाएंगे. So you can pass this class. So similarly, you all can pass, and I wish you all of you a very good luck for your visa approval applications. But please do good karmas and don't elaborate it. अपने तक रखें, अपने और अपने ईश्वर के बीच में रखें, अपने और यूनिवर्स के बीच में रखें, तो वो आपको रिजल्ट ही देगी. Don't try to do के एग्जाम भी मैंने करा है, नंबर भी मैं खुद ही ले लूं. वो नहीं होता, right? ये आदत होती है इंसान की, but we should not do this, right? Yeah. Absolutely not. And if you want a direct consultation or reading, horoscope reading from Dr. Deepika, you can directly reach her. You can give us a call at our immigration number, which is 833 412 8472. Her extension is 6, SIX 6. So press 6 to reach to Dr. Deepika Gupta, our astrology and Vastu expert. And you can also email us at help@immigrationtalkshow.com. And if you're looking for a project placement, you can also connect with me on my contact number, which is +1 732 707 9151. And my email is Rajni at higherITpeople.com. And you could visit our website, which is higherITpeople.com. And when you are trying to connect with Dr. Deepika, you'll also be able to get you'll also be able to hear this extension number, which is 1. So if you want project placement, so all you have to do is press 1. And if you want to reach Dr. Deepika Gupta, so you have to press 6. And again, I would like to say you can email us at help@immigrationtalkshow.com. And that wraps our today's episode of Can Astrology Impact on Your Visa Approval? So a huge thank you, Dr. Deepika, for sharing your expertise with us. And next time what we can do is we can have uh, an episode on numbers, you said? Next time we Yeah, can we can do an episode on numbers. Yes, we can Okay. do that. So So what there are exactly many can you give us misconceptions how regarding is it numerology going to. also. Yeah, there are many misconceptions like regarding some numbers like 13. So I can explain all those things. So we can take next show on numerology. Numerology. Okay. All right. So, guys, that's it for today. Until next time, stay curious, keep exploring the mysteries of the universe, and keep on watching Immigration and Jobs Talk Show. I'm your host, Rajni Bharara, signing off. Thank you so much, Dr. Deepika. It was lovely Thank you, having you. Rajni. Thank you, Rajni ji. Thank you so much. And it's always lovely talking to you. Thank you so much. It's always a pleasure. All right. Everyone, keep on subscribing and keep on watching the Immigration and Jobs Talk Show. I'm your host, Rajni Bharara, signing off. Bye for now. Are you an IT consultant seeking a new opportunity? We offer job placement services for US citizens, green cards, EADs, and visa holders. We also sponsor various work visas like H-1B, E3, TN, and green cards. 20 plus years of experience in the industry. Exceptional employee benefits. Highly rated by our employees. Global presence with 200 plus recruiters and direct clients. Connect with us. Call us on the number 732-707-9151 or mail us at rajni@higheritpeople.com or visit our website www.higheritpeople.com.